posteriori, a posteriori, technically, posteriori rule is followed from the original statement. Ab ab initio means आराम से contract with minor is ab initio void. Actio bona fide सद्भाव कर man having actio bona fide cannot be challenged. Actus non facit reum nisi mensit rea. Actus non facit reum nisi mensit rea. दूरास है. In malice, actus non facit reum nisi mensit rea is an essential element. Actus reus अनुचित कार्य. Actus reus means अनुचित कार्य. Punishment alone can prevent actus reus. Act interim in the meanwhile, इसी बीच. Act interim in the meanwhile, इसी बीच. Firstly, a prayer for act interim can be made. Add ad litem for the suit बाद के लिए. Add ad litem means for the suit बाद के लिए. Ad hoc. An ad hoc committee is being formed. किसी खास उद्देश्य के लिए. Ad hoc means किसी खास उद्देश्य के लिए. Actio personalis moritur cum persona. Actio personalis moritum cum persona. कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति के मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है. कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति के मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है. A right of action dies with the person. Action incumbit onus probandi. सबूत का भार अभियोक्ता पर होता है. Action incumbit onus probandi lies on the prosecution. Action incumbit onus probandi lies on the prosecution. Animus means mentally मानसिक रूप से. Animus possidendi is an essential for possession. Animus possidendi intention of possessing कब्जे का आशय. Audi altrum partem here the other side. Audi altrum partem means here दूसरे पक्ष को सुनो. Audi altrum partem is a principle of natural justice. Damnum sine injuria damage without injury नुकसान बिना क्षति के. Damnum sine injuria is a principle of law and tort. Damnum sine injuria damage without injury नुकसान के बिना क्षति. Injuria is sine damno injury without damage क्षति बिना नुकसान के. Injuria is sine damno injury without damage क्षति बिना नुकसान के. De facto means in fact तथ्य. He is de facto guardian. De jure in law विधि से. De jure cognition has a great significance in international law. De jure means in law. Delegate non-protest delegate. फिर प्रत्योजित नहीं किया जा सकता. शक्ति फिर प्रत्योजित नहीं किया जा सकता. Donatis mortis causa when a person gives his property at the point of his मरते समय संपत्ति का देना. Donatis mortis causa. Ex officio means pardon by virtue of an office. Raman is the officio. Ex officio chairman of the block development committee. Ex parte. Ex parte मतलब ex पक्षी है. Order passed in absence of opposite party. Ex parte means order passed in absence of the other party. Factum valet तथ्य जिसमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है. तथ्य जिसमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है. Factum valet. Ex post facto भूत लक्षी. The Hindu Succession Act was applicable with ex post facto. Ignorantia legis neminem excusat. Ignorance of law is no excuse. Ignorantia legis neminem excusat. Ignorance of law is of no excuse. Intra vires with powers. Intra vires means with the powers. Intra vires act is constitutional. Habeas corpus बंदी प्रत्यक्षीकरण. Habeas corpus बंदी प्रत्यक्षीकरण. Ipso facto. Ipso facto means it is ipso कार्य से ही. Ipso facto that he has sustained injury during the dispute. Inters means आपसी. Principal and agent are inters like the partners of a firm. In personam व्यक्ति बंदी. Inter alia अन्य बातों के साथ साथ. This rule is supporting inter alia the other fact. Executing the degree means to execute decree. Decree का निष्पादन करना. Fact in issue. Every suit must contain fact in issue. Fact in issue. Every suit
must contain fact in its just non scriptum. The unwritten law or लिखित विधि, the constitution of Britain is just non scriptum. Lex loci स्थान का विधि, the family law is immune from lex loci. Latent ambiguity, अस्पष्ट संदिग्धता. Latent ambiguity is nothing during legal proceedings. Lis pendens, a pending suit, विचाराधीन वाद. Lis pendens means a pending suit. Locus standi signifies a right to be heard. Locus standi signifies a right to be heard. सुने जाने का अधिकार. Mens rea, a guilty mind, अपराधी मन. Mens rea is the most essential in crime. Mesne profit, intermediary profit. Mesne profit means मध्यवर्ती लाभ. Mutant is mutandis, with the necessary changes in point of details. यथासंभव परिवर्तन सही. Nemo that code non habit. No man can transfer better title than himself. Obiter, obiter dictum. Prasangokti. Whenever judge expresses his opinion during his judgment in writing which linked with the substance of judgment. Obiter dictum. Per se मतलब स्वतः. Per se मतलब स्वतः. Trespass is actionable without the proof of damage. स्वतः. Per se the proof of damage. Patent ambiguity. Patent ambiguity मतलब अस्पष्ट संदिग्धता. प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया, पहली दृष्टि में. प्रॉफिट एट पे, दूसरे की भूमि से कुछ लाभ प्राप्त करने का अधिकार. पोस्टमार्टम, सब परीक्षण आफ्टर डेथ. पोस्टमार्टम मतलब सब परीक्षण आफ्टर डेथ. क्विड प्रो क्वो. क्विड प्रो क्वो, वाट फॉर वाट. तत्प्रतीत. क्विड प्रो क्वो, तत्प्रतीत. वाट फॉर वाट. प्रो टेंटो, टू दैट एक्सटेंट, उस सीमा तक. रेस जेस्टे, एक ही घटना के अभिन्न अंग. रेस जेस्टे, एक ही घटना के अभिन्न अंग. रेस जुडिकाटा, सूट ऑलरेडी डिसाइडेड. रेस जुडिकाटा मतलब सूट ऑलरेडी डिसाइडेड, निर्णित विषय. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा मस्ट बी अप्लाइड टू को डिफेंडेंट्स केयरफुली. रेस्पॉन्ड सुपीरियर, उत्तरार्थी श्रेष्ठ. द मैक्सिमम रेस्पॉन्ड सुपीरियर इज बेस्ड ऑन पॉलिसी एंड जनरल कन्वीनियंस. राइट इन रेम, लोक पक्षी अधिकार. एवरीवन हैज राइट इन रेम टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी. राइट इन पर्सोनम, व्यक्ति का लक्ष्य अधिकार. द क्रेडिटर हैज राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट द डेप्टर टू गेट हिज मनी इन रिटर्न. रूल ऑफ डैमडू पार्ट, दमदू पट का सिद्धांत. देयर इज अ रूल इन हिंदी लॉ दैट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिकवरेबल एट एनी टाइम कैनॉट एक्सीड द प्रिंसिपल अमाउंट. रेस नोलियस, जो किसी का नहीं है. रेस नोलियस मतलब जो किसी का नहीं है कोई वस्तु. रेस पब्लिक, रेस पब्लिक मतलब सार्वजनिक करना. द इनॉग्रेशन ऑफ ब्रिज टू ओपन इट टू द पब्लिक इज नथिंग एल्स टू मेक द ब्रिज रेस पब्लिक. रेस इप्सा लिक्विटर, परिस्थितियां स्वयं बोलती है. रेस इप्सा लोक्विटर, परिस्थितियां स्वयं बोलती है. सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज काउंटेबल अंडर रेस इप्सा लिक्विटर. स्टेयर डिसीजन, पूर्ववर्ती निर्णय. पूर्ववर्ती निर्णय मीन्स स्टेयर डिसीजन. स्टेटस को, एग्जिस्टिंग कंडीशन, यथा पूर्व स्थिति. स्टेटस को मतलब एग्जिस्टिंग कंडीशन, यथा पूर्व स्थिति. सब जुडिस मतलब इन कोर्स ऑफ ट्रायल. सुओमोटो, स्वतः या अपने आप. सुओमोटो मतलब स्वतः या अपने आप. स्यू ज्यूरिस, स्यू ज्यूरिस मतलब ऑफिस ऑन राइट, विधि सक्षम. स्यू ज्यूरिस मतलब ऑफिस ऑन राइट, विधि सक्षम. अल्ट्रा वीरेस, अल्ट्रा वीरेस मतलब बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार सीमाओं के बाहर. बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन. उबी जस इबी रिबिडियम, जहां अधिकार वहां उसके उल्लंघन के लिए अनुतोष है. उबी जस इबी रिबिडियम, अपकृत्य, जहां अधिकार वहां उसके उल्लंघन के लिए अनुतोष है. अपकृत्य. द प्रिंसिपल ऑफ उबी जस इबी रिबिडियम लाइज इन द लॉ ऑफ थॉट. वर्सेस मतलब बिटवीन, विरुद्ध, बीच में. विश मेजर, दैविकृत, एक्ट ऑफ गॉड. विश मेजर मतलब दैविकृत एक्ट ऑफ गॉड. वीरेस मतलब पावर, शक्ति. वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, स्वेच्छापूर्ण खतरा मोल लेना. वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, स्वेच्छापूर्ण खतरा मोल लेना. द बॉक्सिंग गेम इज एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया. एक्सप्लेन द लीगल टर्म्स. जजमेंट, a judicial decision. A judgment is the last step of competent court while trial
of a suit. Capital punishment. Capital punishment can be granted in case of murder trial. Oath. The court takes the oral evidence on oath. Order. The competent court has power to pass a stay order. Offender. A person who breaks the law is called offender. Prima facie. मतलब from this the prima facie is the case of shows that the court should pass an order of the injunction. Plaintiff. Ravi is plaintiff in the present case because he has brought a suit against Mohan, the defendant. Pleading. Pleading plays an important role in the suit of the parties. Precedent. All subordinate courts follow the precedent of Supreme Court of India. Homicide. The killing of a human being by another human being. All murders are culpable homicide, but all culpable homicide are not murder. Possession. Physical control over a thing or property. Possession is an evidence of de facto ownership. Polyandry. Marrying more than one husband at a time. Polyandry means marrying more than one husband at a time. Inquiry. To examine systematically in detail. Inquiry is the essential part in the criminal proceeding. Quorum. Quorum denotes the minimum number of member of any body of person who present is necessary in order to enable that body to transact its business validity so that the act may lawful. Affidavit. Written sapat patra. Written statement in the name of a person called the deponent by whom it is voluntarily signed and sworn to affirm. Appeal. Proceeding taken before superior court for reversing or modifying decision of an inferior court on the ground of error. Argument. Bahas. A connected series of statements intended to establish or subvert proposition or any statement therein. Bench. Court to decide particular matter or matters. Divorce. To dissolve a marriage. Document means dastabej. Any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks or by more than one of those means intended to be used which may be used for purpose of recording that matter. Explain. Legal maxims. Actus personalis moritur cum persona. Act imprim. In the meanwhile. Alibi. Alibi means absence in the absence. A plea of accused that he was elsewhere. Mens rea. Mens rea means a guilty mind. Ignorantia legis neminem excusat. Ignorance of law is no excuse. Ignorantia legis neminem excusat. मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अगर आपको लॉ का जानकारी नहीं हो तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा. आप किसी देश में जाते हैं तो वहां का लॉ पहले पता होना चाहिए. Exceptional equator. The things speak itself. The things speaks itself. Delegatus non protest delegare. A delegated power cannot be further delegated. A delegated power cannot be further delegated. डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगार है. कोई डेलीगेटेड पावर वो और डेलीगेट नहीं कर सकता, किसी और को नहीं दे सकता है. इजस्डेम जेनरिस ऑफ द सेम काइंड और नेचर. इजस्डेम जेनरिस ऑफ द सेम काइंड और नेचर. कैविएट इम्पेटर. लेट द परचेजर बी अवेयर. de facto means in fact. De jure in law. Under international law, de jure means in law. Under international law, de jure recognition is a proper form of recognition of the state. Obiter dicta, an opinion of law not necessary for decision. Obiter dicta means an opinion of law not necessary for decision. Pacta sunt servanda, contract must be respected. Pacta sunt servanda, contract must be respected. Ubi jus ibi remedium, where there is a right, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. Ubi jus ibi remedium. Status quo मतलब existing condition.